अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आई गॉट सम रिक्वेस्ट कि आप हमें अपनी जो है जो ड्रेसर है उसको प्रॉपर दिखाएं। आपने वीडियो बनाई थी, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर दी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है वो प्रॉपर टूर करवा दूँ। सो दिस इज़ माई ड्रेसर। ये जो परफ्यूम्स हैं ये यहीं पे मैं ज़्यादा सामने रखना चाहती हूँ ताकि मुझे इजी एक्सेस हो, इजीली मुझे मिल जाएँ। सो दे आर ऑल माई ऑलमोस्ट माई फेवरेट परफ्यूम्स। सभी बहुत फेवरेट नहीं है, जैसे ये माइकल कोर्स, दिस इज़ नॉट माई लीस्ट, like it's not least favorite but it's not something like I love, but मेरे पास है। तो ये सब मैंने सेफोरा से लिए हुए हैं, कुछ मैंने नॉर्डस्ट्रॉम से लिए हैं। So this Michael Kors I bought it from Winners. I like it but I don't love it. So yeah, like this is Jo Malone. Is my one of my favorite perfume and one of my most expensive perfume. तो I really love this one. मेरे पास एक और भी हैं, दो travel size, that I think it's 30 ml. I don't know वो कहाँ पे पड़े हुए हैं इस वक्त। खैर, तो these ones, especially I have this Burberry, my favorite, and this is Bright Crystal, Versace, then Nest, or yeah, YSL Black Opium is, oh my goodness, this is one of my recent purchase. I love this one. This smells amazing. And then I have this Gucci Gilded. This is one of my most favorite perfume. जब भी लगाती हूँ लोग पूछते हैं क्या पैक लगाया हुआ है। एंड देन दिस कोको Chanel. This is my recent purchase. I bought it from Shoppers. I love this one. And then this Carolina Herrera. How can you forget this one? This is so sexy, so pretty bottle, but the perfume is also like smell amazing. So and this is okay. This perfume is my least favorite. Literally, like I don't know why I bought it. So इसको मैंने barely like few times spray किया होगा, वो भी बाहर जाते हुए नहीं, because I don't want to feel bad about my smell. तो ये जो है ये कैंडल जार है। कैंडल जो ख़त्म हो गई थी वैक्स, तो मैंने इसको क्लीन करके इसको यूज़ किया। इसमें मेरे परफ्यूम सैम्पल्स हैं। सो बॉटम में जो है मैंने एक वो जो फोम सा होता है जो ज्वेलरी की बॉक्स के नीचे होता है, वो मैंने यूज़ कर लिया और उसके अंदर मैंने छोटे छोटे परफ्यूम रख लिए। तो आते जाते जब भी मुझे घर में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है ना कि मुझसे खुशबू क्यों नहीं आ रही, तो मैं फिर आके फटाफट स्प्रे कर लेती हूँ। और इनमें से जो भी हाई एंड परफ्यूम मैं यूज़ करती हूँ उसका अगर कुछ है मेरे पास सैम्पल, तो वो मैं अपने बैग में रख लेती हूँ। सो मेरे पे बहुत सारे हैं, ये नहीं है, और भी बहुत हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव इन माय बैग राइट नाउ। तो यप, एंड I use candle jars like this. So these are my skincare products from Lancome, Estee Lauder, VDL, and then this is from Lanolips. This is one of my favorite product. It's amazing for eczema and dryness. So whenever I have any patchy skin, like especially my nose area in winters or whenever, जैसे पिछले दिनों कुछ breakout हो गया था मेरे nose के पास, तो वो थोड़ा सा patch सा रह जाता है, तो I use this and within 24 hours मेरी skin जो है वो heal हो जाती है. So I actually use it for my daughter as well. So this is an amazing product. So it's a must have if you have a dry skin. तो उसके अलावा कुछ लिक्विड लिपस्टिक्स वगैरह हैं, ग्लिटर्स वगैरह. सो दिस फर्स्ट दिस इज़ माई हस्बैंड्स परफ्यूम बेसिकली. लाइक वो कहीं कहीं पड़े हुए हैं, खातिए के हैं दो उनके पास, और वो ये भी उन्हीं का ही है जो कभी कभी मैं स्प्रे कर लेती हूँ. तो दिस इज़ माई आवर ग्लास palette. then Sephora के sharpeners and lip balms and ये जो आई शेडोज़ हैं ये हैं सब में. ये Dior का मेरे पास जो है palette, so this is one of my favorite. It's very light, very pretty for everyday use. So this is my Charlotte Tilbury and eyeshadow, bronzer, Becca, small mini stuff. This is Swarovski mirror. That was a gift from Swarovski. And I got my Charlotte Tilbury favorite blushes, setting powder, and this one is my favorite Becca highlighter, shade Opal. Oh my goodness, I can't live without this. This is something really amazing and perfect for brown girls, so must have. So these are also highlighters which I don't use on daily basis. So you may need to clean. Have a bronzer that's from Tarte, and these things are also like NARS bronzer and blushes. And these are limited edition blushes from MAC. So these are my brushes.
ओके तो ये जो सारे ब्रशेज़ हैं इनमें ये मेरे टार्ट के हैं, BH कॉस्मेटिक है, सेफोरा है, सिग्मा है, मोर्फी है एंड रियल टेक्निक। सो दिस इज़ माई मिरर, आई विल लाइक इट। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ बिलोंग नहीं करता बट मैंने रख दिया बिकॉज मुझे बेंड नहीं होना पड़ता, झुकना नहीं पड़ता, सो आई कैन जस्ट यूज़ इट। सो दिस ब्रशेज़ आर लाइक amazing to have on the table ताकि मैं easily इनको use कर सकूँ. These are most of my face brushes, highlighters and all that. These are my eyeshadow brushes, my face brushes for blush and bronzer and powder. So these are my like just a small amount of my skincare routine. जो मेरे deodorants हैं, I love these deodorants and I use them like on every day, on daily basis, like 2 times maybe more than that. Some facial mists हैं, moisturizers हैं, cleansing balms हैं और some facial oils हैं, some serums हैं. तो ये सब लोग जो है यहाँ पे मतलब सब लोग सब products actually यहाँ पे पड़ी हुई हैं. So it's easy to handle. I bought this rack from Amazon. I'm gonna link it down below. If you're interested, you can just use my link and buy this one. And this is like an amazing product. So these are my everyday use moisturizers and night creams, especially these are water ones. तो पीछे कुछ highlighters वगैरह भी हैं, liquid वगैरह, गम है जो मैं यूज़ करती हूँ. These are my cotton pads, थोड़े पीछे रखे हुए हैं ताकि dust वस्ट ना पड़ जाए इनके ऊपर, so they are like sitting in the back. So this is my hand lotion. I bought it from Bath and Body Works, so which is, you know, it was on sale. These are my ordinary products, कुछ curlers हैं, scissors हैं, some facial mists हैं, some like lip products, and these are my lip balms, some lipstick, some lip gloss, and all of them are super lightweight, which I can wear every day. These are from Tarte. They're amazing, very lightweight on my lips, so I love them actually. So that's why they're sitting here. And then ये जो 3 चीज़ें हैं ये बेसिकली मेरे मास्क के स्ट्रिंग्स हैं जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ. फ्योर लिप प्रोडक्ट्स हैं. ये एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं थी, मेरे जो रैक्स हैं लिपस्टिक के, इसलिए यहाँ पड़े हुए हैं. तो this one is like I have my Anastasia and some buttons actually. First of all, these buttons are actually, they belongs to my dresses which I bought recently from Torrid. So this will go in a box क्योंकि मेरे सारे buttons जो एक ही जगह पड़े होते हैं. So these are my Morphe eyeliner and all those things. So okay, so these are my lip products. So don't go crazy, I have a lot of lip products, I am addict. So these are my mini lipsticks, and this is also my lip balms, different type of, like, you know, and again my lip balm. So yeah, now you have an idea how crazy I am about lip products. So these are my mascaras and different ones. Tarte hai, Urban Decay hai, MAC hai. These are my concealers, so all of them are in one place. So these are my liquid lipsticks. Okay, these are not all of them but most of them, तो इसलिए रखे हुए हैं ताकि मुझे आसानी से मिल जाए. I can find them easily if I like any shade for that day, so I can mix and match. So these are my MAC lipsticks. These are not all like सारी lipsticks नहीं हैं मेरी, ये सिर्फ limited editions हैं. तो you know, limited edition जब भी वो हम लोग खरीदते हैं तो different packaging and all that, so I keep them in one place. Second box में भी वही हैं, सबके सब MAC lipsticks हैं. कुछ limited edition की जो है 2-3 shades हैं, कुछ के बस एक shades हैं, जैसे Corolla का एक ही shade था. So this organizer I bought from Winners. It was on sale, like, you know, in clearance. So I think I bought it for like $5, so which was a great deal. So I got my skincare routine products. ये मेरी daily basis की हैं. This cardless spray is amazing. Then I have Dr. Brand and all that. My sunscreen, my facial sprays, my toners, all those things. So this is my Fenty Beauty, you know, जो trio size होता है. Then my cream blushes, primer, and this is my again like bronzer from MAC. These are Tarte, Natasha Denona and Dior palettes. Huda Beauty का भी नीचे पड़ा होगा nude. And then इसमें मेरे जो है contour palettes हैं, Charlotte Tilbury, Smashbox. These are my YSL palettes and Tom Ford and Hourglass. So ये सारे यहाँ पे हैं. उसके बाद
ये रिंग लाइट एक्चुअली पड़ी हुई जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ। सो इन दिस ड्रॉर आई सी लाइक मेरे जो फाउंडेशंस हैं ये जो कॉर्नर में पड़े हैं ये मेरे सारे जो हैं फुल कवरेज फाउंडेशंस हैं, ये वाले मीडियम हैं, और इसके बाद ये प्राइमर्स एंड बीबी क्रीम्स हैं जो टिंटेड फाउंडेशन और प्राइमर्स होते हैं। एंड दीज वंस आर एक्चुअली माई मेरा SPF है। और ये मेरे पाउडर फाउंडेशंस हैं, क्रीम फाउंडेशन है, मेरे सेटिंग पाउडर्स हैं, फिक्सिंग स्प्रे है एंड ऑल दोज थिंग्स। एज यू कैन सी ब्यूटी ब्लेंडर भी पड़े हुए हैं, थोड़े गंदे हुए हैं, वॉश करने की ज़रूरत है तो विच आई विल, स्ट्रोब क्रीम एंड ऑल दोज थिंग्स एनीवे। सो एंड दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर एज वेल। तो ऊपर जगह नहीं तो ड्रॉर में है। So in this drawer I have all of my palettes. मेरे face palettes हैं, eyeshadow palettes हैं, contour palettes हैं, everything is here. कुछ ये brush I don't know why यहाँ पे क्यों पड़ा होगा, ये टेबल पे होता है तो यहाँ पे रख देंगे। Then I have my creams and my eyelash curler, like the backup plan things. So इस वाली ड्रॉर में जो है ज़्यादातर वो चीज़ें जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जो मुझे कभी कभी यूज़ करनी होती है, तो इनमें ये डिओड्रेंट मेरा पड़ा हुआ जो ऊपर जाएगा क्योंकि मैं रोज़ यूज़ करती हूँ तो आई डोंट मैंने क्यों रख दिया होगा। तो few of my palettes, some lipsticks, and this last drawer is actually a junk drawer. तो वो चीज़ें जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये मैचिंग है मेरे लोशंस। दीज आर माई ग्लासेस जिसकी कलेक्शन मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी, इस फोरा के सैम्पल्स एंड नेल फाइलर्स एंड ऑल दैट। सो दीज आर द ड्रॉर्स। ये जो कैबिनेट है, अच्छा ये हिडन कैबिनेट, इसके अंदर मेरे कुछ ब्रशेस छोटे छोटे पड़े हुए हैं, कुछ लिप पेंसिल्स हैं, ये जो जार पड़ा हुआ है इसके अंदर मेरी वो सारे जेल आईलाइनर्स हैं। सो गाइस दीज आर लिप पेंसिल आई बॉट फ्रॉम अमेज़ॉन, और कुछ मैंने पाकिस्तान से ख़रीदी थी। They are super creamy, they are amazing. I'm going to link it in the description box. If you're interested you can buy them from Amazon. They are really cheap and very good quality, so I got those. And then ये मेरे वो जो जेल लाइनर और ब्रॉ पॉमेड एंड ऑल दोज थिंग्स वो यहाँ पे हैं, ये बॉबी ब्राउन टार्ट एंड मैक और पता नहीं कौन कौन से। और पीछे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरी वो हैं स्किन केयर की जो मुझे कभी कभी यूज़ करनी होती है, और ये मेरे आइज़ की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। दिस इज़ जंक सो वी नॉट गोइंग इनटू इट लाइक बिकॉज इट्स सो मच टू हैंडल राइट नाउ, तो ये मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूँगी। सो देन ये वाली जो एक और कैबिनेट है ये भी कुछ जंक सा ही है, अभी फ़िलहाल मैंने इसको सेट नहीं किया। ये भी किसी दिन सेट करेंगे बैठ के, तो फिर एक और टूर करवाऊँगी आपको बिफोर एंड आफ्टर का। तो अच्छा ये दूसरी तरफ जो है मैं आपको अपनी नाइट टेबल भी दिखा दूँ। ये इसमें भी कुछ परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, ये भी मेरे फेवरेट हैं, कुछ गिफ्ट मिले हुए हैं, कुछ मैंने खुद ख़रीदे हुए हैं तो आई यूज़ दैम। तो मैंने इसको यहाँ पास में इसलिए रखा कि जब भी मुझे फीलिंग हो ना कुछ स्प्रे करने की बैठे बैठे तो मैं स्प्रे कर लेती हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर you follow me on Instagram, subscribe to my YouTube channel and on my TikTok. So I'll see you guys soon. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.